What's up, guys? It's your boy Kratos, and welcome back to a brand new title, Alan Wake 2. एंड ऑलरेडी यहाँ पे काफी टाइम से चैनल पे वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी। यहाँ पे साइबर पंक की सीरीज भी स्टार्ट हुई थी, बट साइबर पंक की सीरीज भी अभी उसमें एपिसोड और नहीं आए। एंड क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा बीमार था, तो उसकी वजह से अब एपिसोड में जो डाल नहीं पा रहा था। एंड यहाँ पे एलन वेक भी इस बीच में जो है रिलीज हो चुकी है। सो आज से यहाँ पे जो है एलन वेक के एपिसोड्स अपलोड करेंगे। एंड यहाँ पे मैं साथ में जो साइबर पंक है, तो साइबर पंक के भी यहाँ पे एपिसोड्स में जो है चैनल पे रेगुलर अपलोड करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट गेट स्ट्रेट इनटू आवर टुडेज वीडियो। Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. एंड गाइस, जो प्रोलॉग था, दिस प्रोलॉग क्या काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से प्रोलॉग को जो डिज़ाइन कर रखा है। एंड फिलहाल अभी हमें इस कैरेक्टर को जो है कंट्रोल करना है। मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है कौन है एंड मुझे जाना कहाँ है, कुछ भी मेरे को बिल्कुल मालूम नहीं है, क्योंकि स्क्रीन पे ऐसा कुछ भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। एंड बस मेरे को सामने की ये रास्ता दिख रहा है एंड इसी रास्ते से हम आगे जा रहे हैं इस नंगे आदमी के साथ। मैं कैमरा एंगल ओके, तो मैं कैमरा एंगल आगे भी नहीं कर दे सकता। मेरे को इसका फेस देखना था। वेट, कोई तो है। आई गेस ये दोनों FIB के एजेंट्स हैं, मैं श्योर नहीं हूँ। बट यहाँ पे काफ़ी अजीब अजीब साउंड आ रहा है। जितने लोग इसे फिलहाल अभी स्पीकर्स पे देख रहे हैं, तो मैं कहूँगा आप लोगों को यहाँ पे आप हेडसेट लगा लो, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बैकग्राउंड इफेक्ट जो है वो आप एक हेडफोन पे ही एक्सपीरियंस कर सकते हो। बट एग्जैक्टली मुझे जाना कहाँ है ये मेरे को बिल्कुल अभी मालूम नहीं है। ओए, ये वेट वेट, व्हाट द फक वाज दैट? गाइस, वो जो जंप स्केयर आया, सीरियसली गाइस, मेरे हाथ में फोन था, फोन यहाँ पे ड्रॉप हो गया। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था उस जंप स्केयर को। मुझे मालूम है ये थोड़ा सा इसमें हॉरर जॉनरा भी है, बट ये तो मैंने डेफिनेटली नहीं सोचा था। एंड यू कैन स्प्रिंट बाय टॉगलिंग, ओके। चलिए, फाइनली इतनी देर के बाद ये कम से कम दौड़ेगा तो अब। वेट, ये क्या था? क्या ये इल्यूजन्स थे हमारे? मेरे को स्टोरी का ना अभी बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा कि स्टोरी किस तरीके से आगे जा रही है एंड प्रोग्रेस कर रही है। अभी मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मुझे पता आप में से काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे ये चल क्या रहा है। मैं भी आप लोगों की तरह बिल्कुल कंफ्यूज हूँ कि ये हो क्या रहा है।
वेट, ये कौन है सामने? व्हाट? तो इस आदमी का बेसिकली इन्होंने हार्ट जो है उस हार्ट को निकाल लिया है एंड आई गेस ये अपने आप को द कल्ट ऑफ ट्री कुछ ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. ओके गाइस, सो प्रोलॉग यहाँ पे अब There's जो है the फिनिश हो car, चुका है एंड so अब हम where's यहाँ the से जो है deputy? एंड अपने प्लेएबल कैरेक्टर जो है उसको जो है पे कंट्रोल I'll check कर out सकते that हैं map. एंड ओके सबसे पहला चैप्टर हमारा यहाँ पे जो है इनविटेशन एंड बता दूं यहाँ पे एलन वेक 2 की जो स्टोरी है डायरेक्टली कनेक्टेड है एलन वेक 1 से। सो जितने लोगों ने एलन वेक 1 नहीं खेली है तो मैं आप लोग कहूँगा आप उसकी स्टोरी जो है आप स्टोरी जो है उसको आप देख सकते हो ताकि वो समझ जाए कि एलन वेक 2 जो है किस तरीके से जो है कंटिन्यू कर I रहा should है take a look at that map. एंड आई गेस हमें भी इस मैप पे जो है लुक करना है। सो F2 वॉज द मैप। ओके ओके हमने यहाँ से मैप जो है वो पिक कर लिया है एंड अब मैप को ओपन करते हैं एंड ये सारे सारे लोकेशंस हैं। अभी भी गेम जो है काफ़ी ज़्यादा हाई स्पेक्स पे ही चलती है गेम एंड इसके अलावा गेम में काफ़ी सारे बग्स एंड ग्लिचेस अभी हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि नियरली जल्दी ही इन सारी चीज़ों को भी जो है रिजॉल्व कर देंगे। ओके तो यहाँ पे मैप है एंड फिलहाल अभी हम इस लोकेशन पे हैं
एंड ये सारा मैप है, जिस मैप को हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। विच हट है, जनरल स्टोर है, विच लैडल है, क्लो हॉल हिल्स एड आई गेस यहाँ का जो एरिया है ना, शायद ये वो एरिया है जहाँ पे वो मर्डर हुआ था, जो हमने प्रोलॉग में जो है देखा था। ओके सो लेट्स गो। I think I hear someone. ओके यहाँ पे किसी की हमें आवाज आ रही है इधर की साइड से। Go take a look. Hey, over here. ओके तो यहाँ पे है वो डेप्यूटी, एंड आई गेस इसके इधर का एरिया जो है पूरा सेफ एरिया है, एंड इसके आगे यहाँ पे सेफ एरिया नहीं, क्योंकि यहाँ पे नो एंट्री का बैनर लगा हुआ है। You're half right. Anderson? wait, can we one press करना Saga है? Okay. Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Oh, ये तो गया। Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Okay. I want to see the body. How do we So get let's there? go and check the body जो हमने sure, body that's prologue real में देखी थी। simple. I guess वही Just body through the होगी। hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Okay, so let's go and meet Deputy Thornton at the Before we general get to the store. crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Wait, you can access the case board inside the mine places. Okay, ठीक है। मैं सिर्फ मुझे टैब प्रेस करना है। The Okay, mind मैंने place. थोड़ा सा एक्सपेक्ट नहीं करा My था। version of the mind palace technique. To sift through clues and work the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Okay, let's go. इस बोर्ड पे अभी तक हमें जितनी चीजें पता लगा वो Everything we सारी know सारी about हम the यहाँ पे। previous murders. Worth taking another look. ओके विक्टिम्स है यहाँ पे, मर्डर के मेथड्स हैं, एंड द केस बोर्ड इज अ मेंटल टेक्निक दैट अलाउस सागा टू एनालाइज क्लूज एंड प्रोग्रेस द इन्वेस्टिगेशन। ओके एंड ये लास्ट वाली जो है मेरे पास किलर की प्रोफाइल भी है मेरे पास यहाँ पे 2-3 चीज़ें। ओके एंड वेट, सो ये सारे विक्टिम्स हैं यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो। सो ये है सारे विक्टिम्स। ये विक्टिम 2010 में मिसिंग हुआ था एंड 2012 में डिस्कवर हुआ था, एंड सेकंड विक्टिम 2018 में सम ऑर्गन्स वर मिसिंग, एंड लास्ट विक्टिम जो ये विक्टिम है, ये वो विक्टिम है जिसको हमने शायद देखा था, मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि उसका फेस हमें क्लियरली शो नहीं हुआ था, बट फाउंड 2 days अगो चेस्ट वाउंड वाज रूल्ड एज अ कॉज ऑफ डेथ। ओके एंड ये मर्डर के यहाँ पे मेथड्स है कुछ, यहाँ पे जो मेथड्स अभी तक यूज़ हुए हैं। पहला मेथड यहाँ पे 2 of the victims have bruising, some of form of restraint strap। ओके ठीक है, एंड सेकंड वन most of consist with victim hard to confirm due to condition of the body। ओके तो इसकी डेथ का कोई ऐसा इतना कंफर्म नहीं कि क्या हुआ था, एंड जो लास्ट यहाँ पे डेथ थी एंड ये ब्लोटिंग की वजह से हुआ था यहाँ पे इसकी डेथ। एंड इसके बाद यहाँ पे विक्टिम 3 was covered in illegal tattoos, a message from the killer maybe or their art। एंड यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम गोइंग मिसिंग इन 2010 द विक्टिम हैज़ नथिंग अपार्ट इन कॉमन, एंड किलर मे बी अ स्पोर्ट्समैन और अ हंटर, दैट्स प्रीटी गुड। एंड ये यहाँ पे वो लेक है जिस लेक के पास ये सारी चीज़ें हुई थी। सो चलिए एस्केप प्रेस करते हैं एंड इससे बाहर निकलते हैं। क्या अच्छा मैं और कुछ कर सकता हूँ क्या अभी यहाँ पे? क्या मैं F से ओके अभी फ़िलहाल केस हमारे पास नहीं है तो उसका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके सो आई गेस इसको मैं अब यहाँ से जो है एस्केप कर सकता हूँ क्या? गोल टू जनरल, get to the crime scene,
बट ये हमारा माइंड प्लेस है, तो आई गेस मैं इस माइंड प्लेस से तो बाहर नहीं निकल सकता हूँ। नहीं वेट, आई कैन। I see you're already ओके hard आई at गॉट इट, work, ये इस तरीके से Anderson. वर्क करता है। Close to cracking it? Visiting the mind just getting place does started. not pause the game, Let's so head be down the hill to a mindful crime of scene. nearby threat. ये काफी सी चीज बताई इन्होंने। So let's go and explore करते हैं भाई यहाँ Hey, पे पूरा Casey. एरिया। You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real Okay, funny, so Anderson. यहाँ पे थोड़ा सा टॉन्ट मारा गया है, एंड ये टॉन्ट काफी सीरियस हो सकता है। एंड ये कितनी जेल है? क्या मैं रन कर सकता हूँ? Stairs are out. You That's okay right. to jump down? I'm not that old. ओके, जब हम स्प्रिंट करेंगे तभी यहाँ पे जो मर्फी भी स्प्रिंट करेगा, अदरवाइज वो भी हमारे जो सिंपली वॉक करेगा। Nature gives me a headache. There's too much sky. जाना किधर है? अच्छा इधर की साइड जाना है। चलो ये ठीक है कि यहाँ पे मर्फी हमें जो है एटलीस्ट जो है हमें डायरेक्शन बता रहा है, क्योंकि Not a ऐसा bad हमारी place to स्क्रीन get पे कोई murdered. हमें यहाँ पे मैप देखने को नहीं मिल रहा है। Getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around Wait, here that feels क्या like बारिश हो रही है क्या? You think the local law had मेरे the को sense सिर्फ to यहाँ put up पे a tarp? साउंड आ रहा है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। next coffee's on me. Damn, what's there? तो ये है वो जनरल Deputy स्टोन। Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. ये तो वो बॉडी जो है इस स्टोर के पीछे है, सो लेट्स गो उस बॉडी को जाके चेक करते हैं। FBI, एंड huh? मेरे को मालूम नहीं यहाँ पे थोड़ा फेसेस के साथ ना रेंडरिंग उतनी अच्छी यहाँ पे नहीं है, या फिर ये जो फिल्म ग्रेन है ये ग्रेन की वजह से है, Shootouts with तो the कुछ वैसा। mob? You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see ओके, this तो body, ये रही वो बॉडी, shall we? एंड जिस बॉडी का ये वही बॉडी जिसको हमने प्रोलॉग में देखा था, क्योंकि प्लेस एग्जैक्ट वो सेम है, पोजीशन भी एग्जैक्ट सेम है। लेट्स गो। Now this is And the yes. scene of the crime. We found him on the table. Now, we उसका didn't हार्ट touch निकाल के हम nothing, फेंक you दिया है। know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? वेट, क्या हमें कुछ करना है क्या? Step 1. Examine the corpse. कैसे एग्जामिन करूं? ओके, अब मेरे पे यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे कुछ करने Body में। is positioned on the table. Ritualistic. ओके, तो मेरे को अपने केस बोर्ड में जाना है। एंड रुको, वेट, यहाँ पे क्या करना है मुझे? अलाउ सेज टू सी एक्टिव क्लूज, द की इमेज कैन बी सेलेक्टेड विद दिस एंड प्लेस ऑन द। एक सेकंड में इसको प्लेस करना है क्या मुझे कहीं पे? ओके, Another आई body गॉट turns इट। up just as we arrive in town. Coincidence? कंसिस्टेंट विद प्रीवियस मर्डर, कुछ हमारे पास है क्या? मेरे को लगता नहीं। प्लेसिंग एन इमेज ऑन द कीबोर्ड बिगिन अ न्यू लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एंड व्हेन अ की इमेज इज प्लेस इट विल प्रॉम्प्ट अ न्यू क्वेश्चन, एंड ये वो क्वेश्चन है यहाँ पे, जो क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉम्प्ट हो रहा है। सो लेट्स गेट बैक और अपने गोल्स जो है उस गोल्स पे चलते हैं। एंड आई गेस ये मेरे को थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे नहीं लगा कि अगर आप जैसे केस बोर्ड में यहाँ पे आ चुके अपने माइंड के अंदर, एंड हमें वापस से यहाँ से जो है एग्जिट करना पड़ता है, ये मेरे को सीरियसली बिल्कुल पसंद नहीं है जिस तरीके से वर्क कर रहा है ये। एंड ओके, यहाँ पे मुझे कुछ फोटोज कैप्चर करनी है या फिर एग्जाम Bruising on the कलेक्ट, wrist from the cargo straps holding him down. ठीक है। एंड Incised stab wound. Chest cut open. Heart Yeah. removed. इसका The हार्ट killer जो है left the यहाँ पे heart right next to the body. मेरे को स्टार्टिंग में लगा था कि किलर्स को इसका हार्ट चाहिए, बस ऐसा नहीं है कि किलर्स को इसके हार्ट की जरूरत नहीं थी। एंड वेट, क्या मैं इसको जूम कर सकता हूँ? ओके यस, आई कैन जूम हिम, एंड अब मैं इसका फेस देख पा रहा हूँ जो कि मैं स्टार्टिंग में नहीं देख पा रहा था। तो वापिस से चलते हैं केस बोर्ड पे,
एंड हमारे पास कुछ यहाँ पे फोटोज आ चुकी है, तो इन फोटोज को जो हम प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। वेट, न्यूली डिस्कवर्ड क्लूज कंसिस्टेंट विद द प्रीट, मैं इन दोनों बाकी दोनों को क्यों नहीं प्लेस कर पा रहा हूँ? ओके नाउ थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लेफ्ट राइट जाना पड़ेगा इसको प्लेस करने के लिए। Keep trying. कैसे करना है मुझे? एक सेकेंड। न्यूली डिस्कवर्ड क्लूज कैन बी प्लेस ऑन टू द टॉप ऑफ द क्वेश्चन। आई गेस अगर मेरे को रखना है तो मैं इसको यहाँ रख के भी तो स्ट्रिंग्स को रख सकता हूँ, जो कि वर्क नहीं कर रहा मोर और लेस। एक सेकेंड, क्या मैं इसको भी ड्रैग नहीं कर सकता ना? ये पता मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है क्या वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है। क्लूज का जो ऑप्शन है हमारे सामने, ओह वेट, क्या मैंने कुछ गलत करा क्या यहाँ पे? एग्जैक्ट देखो तो मिडल में दिखा रहा है ये, बट मैं मिडल में से प्लेस कर रहा हूँ तो प्लेस क्यों नहीं हो रहा है? लेट मी सी गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है ये। ओके तो सिंपली मुझे कंसिस्टेंट पे प्लेस करना था। Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. ओके तो यहाँ पे यार 2 क्वेश्चन और आ चुके हैं। द विक्टिम, यहाँ पे 2 फोटोज आई गेस द विक्टिम में, एंड द किलर जिसमें भी 2 फोटोज हो रहा है। तो अब हमें इन दोनों फोटोज को भी यहाँ पे जो है फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले तो निकलते हैं हम अपने इस केस माइंड, जो भी हम जिस चीज़ के अंदर है, इससे पहले निकलते हैं द माइंड गेम, जो भी आप कहो इसे। एंड ये चीज़ देख लो कितनी ज़्यादा इरिटेटिंग है। Who is our victim? Who killed him? वेट, यहाँ पे ये एफ Need to पहले find नहीं more आया था ना? clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? अच्छा तो मैं इन सबको एक बार में कर सकता था, मैं बार बार जो जा रहा था उसकी नीड नहीं थी। एंड एक और यहाँ पे है विक्टिम के, यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे क्लूज हैं, इन क्लूज को भी चेकआउट करते हैं हम। Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? क्या ये लोग रिकॉर्ड कर रहे थे? मेरे को ऐसा याद नहीं कि प्रोलॉग में हमें यहाँ पे कुछ ऐसा रिकॉर्ड देखने को मिला था। Waiting. एंड आई गेस इतने ही यहाँ पे क्लूज की जरूरत थी, हमें क्लूज तो ज़्यादा जरूरत नहीं थी। ओके तो इस बार हम स्पॉन भी डायरेक्ट अपने केस बोर्ड के पास नहीं हुए, जो कि हम यूजुअली होते हैं। एंड वेट, यहाँ पे क्या This है? mug always cheers me up. नॉट द वर्स्ट मॉम, आई गेस ये इसकी डॉटर ने इसको दे रखा है। एंड ये मैप है क्या सिटी का? ओके तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं इस मर्डर साइट पे। हम इस लोकेशन से स्टार्ट करा था, अगर आपको याद होगा। हम यहाँ से गए थे जनरल स्टोर, एंड जनरल स्टोर से बैक साइड में मर्डर साइट। ओके लेट्स गो टू केस बोर्ड। अब हमारे पास विक्टिम्स है एंड टॉक टू समवन को। विक्टिम्स हमारे पास कौन कौन से हैं? एक सेकेंड, अभी ये वर्क कर रहा था ये विक्टिम या फिर किलर, किस में है ये? ओके तो ये किलर, वेट वैसे किलर में आना चाहिए ना, विक्टिम में क्यों आएंगे ये? Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. ओके तो अभी हमें और क्लूज यहाँ पे जो है फाइंड करना है। ये गेम एक हॉरर गेम थी, बट फिलहाल अभी हमें यहाँ पे जो है पजल्स को सॉल्व करना पड़ रहा है। एंड ये पजल की एनिमेशन मेरे को उतनी अच्छी नहीं लगी टू बी ऑनेस्ट। हमें बात किससे करनी है इस विक्टिम के बारे में जानने के लिए? कुछ हिंट है क्या आसपास जिस हिंट को मैं यूज कर सकता हूँ? क्या इसके बॉडी के आसपास कुछ हिंट है? डेफिनेटली नॉट, इस बॉडी के आसपास तो नहीं। ओके तो यहाँ पे हमें अब ऑफिसर से बात करनी है। Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years वेट, ago. ये भी एक I FBI haven't एजेंट heard था। a word about him since. Well, until now. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. ओके तो हमें सारी ये क्लू भी मिल चुका है। एंड पहले हम बात करते हैं यहाँ पे So you कैसी से। knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state.
But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. तो फिलहाल 2 क्वेश्चंस और हमारे पास So यहाँ what पे पूछने के happened लिए, to so let's Nightingale ask. after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. ओके, चलो पहले अपने केस बोर्ड को जो है हम कंप्लीट करें. एंड हमारे पास विक्टिम्स के भी यहाँ पे क्लूज आ चुके हैं, सो लेट्स गो. एंड विक्टिम्स के भी जो क्लूज हैं, क्लूज को यहाँ पे पुट करते हैं. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. यहाँ पर 2 क्लूज और जो हमने पहले कलेक्ट करते हैं, उन क्लूज को अब मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ. ओके, एक क्लूज और हमारे पास अभी है, तो इस क्लू को भी यहाँ पे प्लेस करते हैं हम. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? क्वेश्चन तो काफी सारे हैं इसमें. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. वेट, क्या प्लेस करना है ये? ओके, कुछ प्रोफाइलिंग यहाँ पे आया है. व्हाट डज दैट मीन? यूजर इंट्यूशन शैगर कैन डिस्कवर न्यू क्लूज बाय प्रोफाइलिंग पीपल ऑफ इंटरेस्ट. तो 2 क्वेश्चन है, रिचुअल मर्डर या फिर मिसिंग पर्सन. तो पहले हम चेक करते हैं रिचुअल मर्डर. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flip the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. ओके, तो रिचुअल मर्डर हम कंप्लीट कर चुके हैं. सब चेक करते हैं मिसिंग पर्सन वाली चीज. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. वेट, क्या ये कोई मैजिशियन है क्या जिसको कुछ ऐसे पता लग जा रहा है? एंड केस बोर्ड में विक्टिम केम फ्रॉम, अब हम इसको भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं. वेट, अब क्या करना है यहाँ पे? इसके आगे तो कीज यहाँ पे गई नहीं. आई गेस विक्टिम केम फ्रॉम में हमें और चीज़ें जो है ढूंढनी पड़ेगी. एंड केस प्रोफाइल तो आई गेस मैं ऑलरेडी यहाँ पे चेक कर चुका हूँ, दोनों मिसिंग पर्सन एंड रिचुअल्स. तो इस पे तो हमें वर्क नहीं करना है. मैप में भी ऐसा यहाँ पे कुछ चीज़ें बाकी नहीं बची है. The lake Okay, is guys, यहाँ पे connected to shortcut भी Nightingale है. somehow. तो अब हमें इस लेक को जो है Casey, चेक करना है. Let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those वेट, हम witnesses. ये कहाँ गए?
The job is unfinished. That वेट seems आई गेस pretty इस जगह को हमने एक्सेस करा था. What was this guy नहीं doing नहीं. skinny dipping it this time? Tracks. Barefoot. ओके तो ये हो Nightingales? सकता है नाइटिंगेल. They come out from under the boulder. Makes no sense. I didn't know trees got... There's a piece of paper on the ground. वेट पेपर कौन सा है? ये पिक क्यों नहीं कर रहा है इस पेपर को? It felt like a message was a message. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Okay, the manuscript I pages should can profile be Nightingale read. about this page. Okay, so वापस चलते हैं इसके माइंड गेम के जो भी अंदर है एंड प्रोफाइल करते हैं एंड आई गेस यहाँ पे प्रोफाइल में एक नया ऑप्शन आना चाहिए. ओके द पेज नाम से आ Page in चुका the है. woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. ओके एंड रुको हमारे पास कुछ और चीज़ें भी चेक करने के लिए. पहले केस बोर्ड में आते हैं एंड केस बोर्ड में आई गेस विक्टिम फ्रॉम में इनको भी डालना है ना. यस ट्रायल हैज बीन कोल्ड. ओके दो विक्टिम हमें जो मिले हैं उनको हम बाद में यूज़ करने वाले हैं. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. ओके एनीथिंग एल्स हियर. ओके यहाँ पे जो ये हमें मिल रखा है तो इसको भी प्लेस कर देते हैं एंड एक और है ना हमारे पास, इसको भी प्लेस कर देते हैं. Found आई गेस all ये I कंप्लीट can हो चुका है ना. here. यस Time to properly examine the body. See what I can find inside. अब हमें इसकी बॉडी को जो है एग्जामिन करना है. आई गेस एग्जामिन करने से कहीं ले जाना पड़ेगा. एंड ये वो मैन्यूस्क्रिप्ट है जो मैन्यूस्क्रिप्ट हमें मिली थी वहाँ पे. एंड इस मैन्यूस्क्रिप्ट में ये सारी चीज़ें लिखी हुई जो कि आप रीड यहाँ पे कर सकते हो. ऑलरेडी यहाँ पे सेगा ने जो है शॉर्ट में बता दिया है कि इसका मतलब क्या, इसमें क्या लिखा हुआ है. बट अगर आपको रीड करना है तो आप लोग यहाँ से जो है इसको रीड कर सकती है. एंड चलिए यहाँ से इसके माइंड से हम जो है पहले बाहर निकलते Casey, हैं. I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. ओके तो यहाँ पे मैप को मैं एक्सेस कर सकता हूँ बट वो क्या मैं मार्क कर सकता हूँ क्या जब मैं यहाँ पे हूँ एंड मर्डर साइट यहाँ है. सो क्या आप इस ये वे को फॉलो करेगा? चलो फिर आप इस ऊपर चलते हैं. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their तो design? यहाँ है वो बॉडी. All the above? You It's made all it back. about control. Good. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP.
Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. ओके शॉर्टकट की है हमें जो मिल Thanks. चुकी है बट Let's get the car. Drive to Bright Okay, so Falls. पहले हमें and talk कार to these लेकर आनी है. Let's witnesses, go. The bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they वेट see यहाँ पे ये this क्या way. लोकेशन है ये आई गेस लेटर हम शायद इसको यहाँ पे एक्सेस कर पाए वेट मेरे को डोर ओपनिंग की आवाज आई I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. क्या कुछ और भी है क्या यहाँ पे आसपास ओके वेपन अपग्रेड कैन बी यूज्ड टू अपग्रेड वेपन्स इन द माइंड पे वेपन्स है भी कुछ मेरे को तो आइडिया नहीं था इस चीज़ का बिल्कुल भी सो ये पिस्टल है एंड अच्छा इसके लिए हमें ये सारी चीज़ जरूरत पड़ेगी अभी मेरे पास सिर्फ फिलहाल 2 ही है तो इसको जब हमें और मिलेगा तब हम इसको जो है बाकी कंप्लीट करेंगे Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. ये शॉर्टकट रास्ता मुझे लॉन्ग कट क्यों लग रहा है वेट अब इनमें से हमें कौन से रास्ते पे जाना है कैसी को मालूम है क्या ओह यस चलो कैसी को यहाँ पे मालूम है Here we are. यस हम यहाँ पे आ चुके हैं Let's drive बट back to town and meet the sheriff at the diner. आई गेस ड्राइव भी यहाँ पे जो है कैसी करने वाला है ओके ये हमारी कार है ही नहीं वेट हम क्या यहाँ पे डायरेक्ट टेलीपोर्ट होंगे क्या वेट यहाँ पे एफ का आया था ना कैसे जरा साइड हो जाओ थोड़ा I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. सो डेट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइज उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों को मजा आया होगा इस एपिसोड में अगर आप सभी लोगों ने एपिसोड को एंजॉय करा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना है साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना तो मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे गाइज